तो आज हम बात करेंगे एनआरआईज की। एनआरआईज में काफ़ी देखा जाता है दे वांट टू कम बैक टू इंडिया, दे वांट टू रिटायर अर्ली बिकॉज one of the advantage that NRIs have is that they make much larger amounts of money than the rest of us who are staying in India. अब क्या होता है, एनआरआई वहाँ पे अकेला थोड़ा बोर हो जाता है। एनआरआई क्या, जो आदमी यूपी और बिहार से या महाराष्ट्र से बेंगलोर गया है वो भी उतना ही अकेला रहेगा जितना एनआरआई इंडिया से यूएस चले गया है। अब सोशल लाइफ थोड़ा कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। यू डोंट हैव टू अटेंड वेडिंग्स, यू डोंट हैव टू अटेंड फ्यूनरल्स। ये सब होने के कारण उसका सोशल लाइफ थोड़ा कम होने के कारण उसका थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता है, उसके पैसे भी थोड़े उस मामले में कम खर्चा होते हैं। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशल लाइफ, I wouldn't say lack. Generalization is a very bad thing. Don't want to generalize it, but there is some gap between how much money and how much time average Indian spends versus average immigrant spend. So because of that, there is always this push and thought at the back of the mind: should I go back to India and do nothing and retire early because now that I have substantial amount of money? And what would be my expenses once I return back to India? That is always a nagging question for each and every NRI. Now, it's not as if this guy hasn't been in India, hasn't lived in India, he doesn't know आटे दाल के भाव उसको पता नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसको सब पता है। फिर भी his lifestyle has changed. His lifestyle has undergone substantial change because of this move from India to US or Europe. And then he is trying to see how much would be my expenses once I go back to India. Will they rise? Because he keeps on hearing private schools का cost 5 लाख रुपए पर ईयर फीस, वहाँ पे तो पब्लिक स्कूल फ्री है ऑलमोस्ट। तो ये सब प्राइस वहाँ पे कार्स आर एज मच एक्सपेंसिव एज कार्स इन इंडिया। तो वो सब देखने के बाद वो सोचता है कि इंडिया में जाके मेरा सैलरी कम हो जाएगा, शायद जीरो हो जाएगा इफ आई रिटायर अर्ली, देन व्हाट वुड बी माई एक्सपेंसेस इन इंडिया। देयर इज अ सिंपल वे टू कैलकुलेट योर एक्सपेंसेस इन इंडिया। लुक एट योर लाइफ स्टाइल फर्स्ट। आप कितना खर्चा करते हो, कहाँ खर्चा करते हो। एज अ रूल ऑफ थंब, in my opinion, if you are buying stuff at Walmart, तो तुम्हारा 10 लाख में हो जाना चाहिए। अगर आप वॉलमार्ट या कॉस्टको में जाके शॉपिंग करते हो एवरी मंथ, देन तुम्हारा खर्चा 10 लाख में हो जाना चाहिए, क्योंकि वॉलमार्ट में जाने वाला आदमी 90% टाइम घर का ही खाना खाता है। रोज अपने डब्बा लेके जाएगा, लंच बॉक्स लेके जाएगा और वही खाएगा 90% ऑफ द टाइम, 10% ही माइट ईट आउट। अगर आप वॉलमार्ट से चड्डी बनियान भी खरीदते हो तो आपको तो 8 लाख में ही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। वॉलमार्ट इज लाइक अ डी मार्ट इन इंडिया। हु बाइज अंडरवेयर एंड बनियान इन फ्रॉम डी मार्ट इन इंडिया? नथिंग रॉन्ग विथ इट, दे आर ऑल गुड क्वालिटी, comparable to the top brands also, but there is some kind of underlying assumption that not so rich people would go to DMart to buy clothes. Similarly, in the US also there is this underlying assumption कि Walmart में तुम कपड़े खरीद रहे हो तो you are not one of the richest person out there. So if you are one of those guys who eat lunch, who eat food that is made at home 90% of the time, who shops at Costco or Walmart, then your expenses are not going to be very very high. You should be happy with 10 lakh 12 lakh, उसके ज़्यादा उसका एक्सपेंसेस होने वाला नहीं है। There is always outlier, there are always outliers, so there is no generalization that can be made. अब प्रॉब्लम क्या है कि यूएस से इंडिया आने वालों की संख्या तो बढ़ती जाने वाली है, दैट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। ऐसा तो होने वाला नहीं है कि जो रिसेंट पास में यूएस गए हैं हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 40 बिलो 40, उनके H1B पेंडिंग है। नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू द यूएस हैज़ गॉन अप ट्रिमेंडसली। उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। दे कैन स्टे इंडेफिनेटली इन द यूएस बिकॉज ऑफ H1 एक्सटेंशंस एंड ऑल दैट, बट देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ not getting that extension.
And in that case, number of returnees to India is going to increase, and you could be one of them. And not all NRIs are rich. ये जो इंडियन लोगों में ये लगा हुआ है कि एनआरआई तो उसका बहुत पैसा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हारे से तो ज़्यादा ही कमाएगा वो, उसको तो वहाँ पे खर्चा भी उतना करना है। वहाँ पे उसको, अगर तुम सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रह रहे हो, तो आपको 2,000 तो वन बेडरूम में देना है, $2,000, विच इज़ लाइक 1,60,000 1,70,000 पर मंथ। तो उसका रहने का खर्चा है, तो वो तुमसे ज़्यादा पैसे तो कमा ही रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई ही कैन अफोर्ड इट। एंड returning back to India is a great thing, honestly. It may be third world country, it may have all the filth, it may have all the disorder, it may have a lot of lawlessness, but it doesn't really matter to you as long as you stay in your bubble. And you have been living in your bubble forever. US में भी आप बबल में ही रह रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप रास्ते पे मतलब इतना आपका रास्ते के लोगों का कांटेक्ट नहीं है। यू आर लिविंग इन अ बबल, एक्सेप्ट व्हेन यू गो बैक टू मीट योर फैमिली बैक होम, दैट्स व्हेन यू कम आउट ऑफ योर बबल एंड मीट अदर पीपल। अदरवाइज योर फ्रेंड्स, योर ऑफिस, योर होम, इट्स ऑल इन अ बबल। ठीक है, तो इंडिया आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स अ ग्रेट कंट्री, इफ पर्टिकुलरली फॉर पीपल हु आर डूइंग वेल, राइट? In the US, average NRI would be in top 10% of US population simply because he has a good job. So by default, you are in top 10% income-wise in the US. Here, by default, you are going to be in top 1% of Indian population. The difference between 1% in India and 10% in the US is not that vast. It's not that vast. Yes, roads are bad, but as long as you are in your car, air-conditioned car, you might feel sad by looking outside once in a while, but the human being is so adaptable, you will start not noticing all the filth, you will start not noticing all the poverty around you, and you should be happy with whatever you have in India. So, coming back to this migration and calculating expenses in India, India is not, it's a poor country. ठीक है ना? If you look at per capita GDP, it has, pretty low, not at the very bottom, but last 10% में होगा इंडिया शायद, मुझे ही पता नहीं है। आई एम नॉट स्टैटिस्टिशियन, neither I track all this, but and since your income and your wealth will put you in top 1%, not 0.1%. 1% and 0.1% are miles and miles apart. Is the difference between millionaire and a billionaire in the US. So these are miles and miles apart. So ऐसे इंडिया में तो और भी स्टार्क डिफरेंसेस है। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या आता है कि हर किसी को लगता है कि बाकी लोगों के पास बहुत पैसा है। आप किसी से बात करो, सिक्योरिटी गार्ड से बात करो, वो बोलता है मेरे घर में तो 10 एकड़ खेती है, खेती का भाव तो 50 लाख रुपए एकड़ है, मेरे पास तो 5 करोड़ रुपये थियोरेटिकली है। ऐसी सब बातें आपको सुनने को मिलेंगी। इससे आपको, आप रास्ते पे देखोगे, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखेंगी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो करोड़ों में पैसे कमाते होंगे शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा इंडिया में सबको लगता है कि बाकी लोगों के पास बहुत पैसा है। इट मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, डजंट रियली मैटर टू यू। What matters to you is you yourself, nothing more than that. And for you, India has everything. You can have far more fun in India with 10 lakh rupees than you can ever dream about in 150K in the US. Okay? यहाँ पे every restaurant you go to, you can eat everything, almost everything, because the menu is curated with your taste buds in mind. In the US, आप कौन सी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको आधी चीज़ें तो समझ में आएंगी, मैं खाऊँ तो क्या खाऊँ। और तुम वेजिटेरियन हो तो फिर तो तुम्हारा ज़िंदगी एकदम ही बोगस है। वहाँ पे ना रेस्टोरेंट आपके लिए बने हुए, ना क्लब्स आपके लिए बने हैं, ना बार्स आपके लिए बने हैं, कुछ आपके लिए बना नहीं है। इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, आपके पास थोड़े बार है ना, 10 लाख रुपए साल के खर्चा करने की आपकी ये है, तो आपके लिए एवरी डोर इज ओपन। यू कैन गो टू द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट, यू कैन स्टिल अफोर्ड इट। यू कैन ईट एट द स्ट्रीट, यू विल एन्जॉय इट। यूएस में आप क्या एंजॉय करोगे? खाना तो आप एंजॉय करोगे नहीं।
That's why you are eating 90% of time at home despite making 150K. 150K कमाने वाला यूएस का आदमी जितना एंजॉय कर रहा है उसे तो आप 10% भी करोगे नहीं. ठीक है. तो गोइंग बैक टू इंडिया इज ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन. Nowadays, whatever you get in the US, you get it in India. What you don't get in India are the nice biking trails, nice greenery, free swimming pools, nice swimming pools, free of cost, nice tennis courts, almost free of cost. Whatever you get free, nice air, nice and clean air. There is no, you cannot associate any cost or price to that. That you get all those things you get it free in the US. For an IT professional who comes from the मिडिल क्लास के लोग ही आईटी में जाते हैं. अपर क्लास वाले काय को आईटी में जाके प्रोग्रामिंग करेंगे. लोअर क्लास वालों का तो इंडिया में थोड़ा हाल बुरा है, लेकिन वो भी आ सकते हैं, वो भी आते ही है. तो लोअर मिडिल क्लास से लेके तो अपर मिडिल क्लास के लोग आईटी में है. उनके लिए तो देयर इज़ अ लाइफ स्टाइल चेंज इफ़ यू गेट इन टू 1% ब्रैकेट, इंडियन इनकम ब्रैकेट. तो you have virtually everything is open for you. Entire country is open for you. Every hotel is open for you. Every restaurant is open for you. Every bar is open for you. You can easily afford it with 10 lakh rupees expenses. If you make it 20 lakh rupees expenses, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. 10 लाख खर्चा करने वालों और 20 लाख खर्चा करने वालों में फ़र्क एक ही होता है कि इसके बच्चे का स्कूल का एक्सपेंसेस ज़्यादा है, उसके बच्चे का स्कूल का एक्सपेंसेस कम है. उतना ही फ़र्क है. बाकी सब्जी रोटी वो भी वही खाता है, तुम भी वही खाते हो. बाकी कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं. इसलिए फॉर रिटर्नीज who are aspiring to return back to India, I think it's a great opportunity. Never before in the history of India, these two countries have become so close to each other. By standard of living wise, by people wise, if you go to Bangalore, you will find people speaking in English. If you go to Florida, you will find half of the people speaking in Spanish. So you'll feel more at home in India rather than in the US, especially if you don't know the local language. At any rate, those things apart. But I think don't overthink about cost of living in India. You may think it's very high. It is not. 90% of the costs are going to be same for everybody. It's 10% of the expenses which are specific to you. 10% expenses are specific to you. If you want high-end Mercedes SUV, it's going to cost at least 3 times that it costs in the US. If you want house which is similar to the house in the US, in Texas, it's going to if you want to buy a house that is a similar house like you get in Texas, in Bangalore, then sky is the limit. I don't think even a very rich person can afford a great house in Bangalore, which is like maybe 10-15 crore minimum. So a point is, if you are a middle income guy in the US, you will find life much more fun, much more interesting, much more happy in India rather than staying put in the US. Doesn't mean that you will be happier. Happiness, to khair, everybody has different definition of happiness, but think about it. Cost of living in India is still much less than you think. 10 लाख में आपका बढ़िया हो जाएगा. उतना एंजॉय आप 150K में जो कर रहे हो वो आप 10 लाख में यहाँ पे करोगे. ऑल द बेस्ट.